of all, to all those people who have decided to prepare for GATE 22, 23, ESE 22, 23 or कोई भी other exam, or to those people who want to prepare for the exam which is in this particular year 21. ध्यान से सुनना सबसे पहले चीज़, the very first thing, even before starting any battle of life, the foremost important thing is why you want to do that. ध्यान से सुनिएगा, this session will be important for each and every one of you. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है किसी भी बड़े टफ बैटल के लिए जिंदगी में योर वाई मस्ट बी क्लियर. दिस इज कॉल्ड द गोल्डन सर्कल. अगर आप एक बेहतरीन किताब पढ़ेंगे, इफ यू वांट टू रीड, आई कैन सजेस्ट अ वेरी गुड बुक रिटन बाय साइमन सिनेक, स्टार्ट विथ वाई. ये ना 3 गोल्डन सर्कल, दिस इज वाई, दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाट. मोर ऑफन देन नॉट, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, more often than not we have a fixation of this on this what. मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, what is that I want to achieve. More often than not we channelize our energy to find out this what, which is not a bad idea. If you see our, अगर आप हमारे ब्रेन का सेटअप देखेंगे, if you see that what, how and why, the processing of what, that is, it means the calculation and the language. हाँ, वो जो जिसका प्रोसेसिंग होती है that is नियोकॉर्टेक्स. हमारे ब्रेन के नियोकॉर्टेक्स में होती है इसकी प्रोसेसिंग. ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, नियोकॉर्टेक्स में. Whereas the limbic part of the brain is responsible for why and how. And that is why, because the limbic part of the brain is responsible, and that is why every time when you say I have taken this decision on my gut, मैं गट से डिसीजन लिया हूँ, मोर ऑफन देन नॉट योर डिसीजंस आर करेक्ट. माई पॉइंट इज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव एब्सोल्युटली फुल मार्क्स, यू वॉन्ट टू मास्टर क्वांट सेक्शन, द वेरी फर्स्ट थिंग इज वाई. वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वाई यू वॉन्ट टू अचीव. मिस्टर जिम रॉन सेड, व्हेन द वाई इज क्लियर, द हाउ एंड वॉट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. आप में से कुछ लोगों का होगा वाई, सर मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए करना है बस. सर मेरे को ना बस एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में, पब्लिक सेक्टर में जाना है बस. सर मेरे को ना इस एग्जाम को निकाला, मुझे आईआईटी में जाना है. देयर कैन बी 100 रीजन एंड दोस रीजंस आर एब्सोल्युटली पर्सनल, वेरी वेरी पर्सनल, बट देयर मस्ट बी सम रीजन. सर व्हाट हैपन इफ आई डोंट हैव अ रीजन. दीज आर लॉन्ग जर्नीज ऑफ लाइफ. 1-1.5 साल जहाँ पे आप देते हो ना, कभी ना कभी, मैं ओपन हाउस कर दूंगा, चिंता मत करो. आई विल बी डिस्कसिंग, डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस गाइस, डोंट वरी. मैं आपका ना क्वेश्चन लूंगा, थोड़ी देर मेरे पॉइंट सुनिएगा, फिर मैं ओपन हाउस कर दूंगा. राइट, इट विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन. जो भी आप पूछना चाहते हो सब पूछ सकते हो, पहले आप सुनिएगा. मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि जिंदगी की बड़ी लड़ाइयों में आपका वाई क्लियर होना चाहिए. इन द टफ बैटल्स ऑफ लाइफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर वाई. बट क्यों, यू नो वाई डू आई नीड माई क्लियर कट विजन ऑफ वाई? बिकॉज सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, you will get exhausted, you will reach your threshold, and they'll ask, and then you will ask yourself, why should I prepare? जब सब लोग आराम कर रहे हैं, everybody is taking rest, why should I work hard? When nobody is working hard, why should I work hard? I can also enjoy this time. At that time you need a strong reason, a very strong reason why you should work hard. To work for more than 8, 10, 12, 15 hours, you need your why must be clear. और सिर्फ एक इंडिविजुअल के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनीज के लेवल की बात कर रहा हूँ. बड़ी बड़ी कंपनीज, इट्स नॉट व्हाट यू सेल, इट्स व्हाट यू स्टैंड्स फॉर. फैंटास्टिक बुक, एनी बुक ऑफ जिम कॉलिंस, हाउ द माइटी फॉल, गुड टू ग्रेट, ग्रेट बाय चॉइस, गुड बिल्ड टू लास्ट, गुड टू ग्रेट, ग्रेट बाय चॉइस, हाउ द माइटी फॉल. Another fabulous book by one of the Harvard professor, The Blue Ocean Strategy. Fabulous book यार, जबरदस्त किताब. Every single company, whichever really made it big, they had a very clear vision of their why. मैं आपको ये बोलता हूँ, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो आप ही हो ना. You are the biggest project of your life. करेक्ट है ना? If you are the biggest project of your life, so don't you think our why must be clear? Sir, but you know what, I'm really sorry to say, but I don't have that kind of skill. That's not a problem. Believe me, that's not a problem. This what and how will take care of itself. Don't worry about that. But because this is very personal,
And this takes time, and that is why people don't give enough time for this. आज का दौर अल्ट्रा इन्फॉर्मेशन का दौर है ना. आज के टाइम पे लोग अपने आप को बोर नहीं करना चाहते. आज के टाइम पे ना जो सबसे कम टाइम जिसको देते हैं ना वो हम अपने आप को देते हैं. And that's why people don't want to think about this. I want people to think about this. And then take action. Why? Because action is the best answer. Whenever in doubt, take action. Every time, whenever you're in doubt, take action. Action kill all doubts. Fine, you're clear with your how, why. Now comes the part what and how. Why should I achieve? Because of this reason. For my parents, for myself, for my dreams. And this in real world called the mountains are calling. When the path calls your name, just walk, don't ask. इसी को बोलते हैं the mountains are calling. Second thing, when you have a clear cut why, this world is like a cafeteria. इस cafeteria में ना you can get whatever you want as long as you are ready to pay the price. Price का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है. Price does not mean only in monetary terms. Price is more than that. But इसमें मैं अपनी तरफ से points add on करता हूँ. Let me add on some more points. This world is like a cafeteria. You can get whatever you want as long as you are ready to pay the price. You have to pay the full price, and you have to pay the full price in advance. That's the how part. That's the how part. Sir, क्यों? Success is reserved for those who search for success. और बाकी सक्सेस के लिए आपको प्लान करना पड़ता है ना. लोग प्लान नहीं करते ना. पीपल बोरिंग है ना वो सब चीज़. आज के अल्ट्रा इंफॉर्मेशन के दौर में पीपल वांट एक्साइटमेंट, एंड प्लानिंग एक्साइटिंग नहीं है ना यार, थ्रिलिंग नहीं है, बिकॉज नोबडी इज वॉचिंग यू. आज के टाइम पे वी डू दोस काइंड ऑफ स्टफ एंड पीपल आर वॉचिंग अस. दिस वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय सूडो इंटेलेक्चुअल्स. ईच वन ऑफ अस टू सम और द अदर एक्सटेंट we are pseudo intellectuals. Lao Tzu once said the true ultimate test of wisdom is when you understand the extent of ignorance. सही है यार. Each one of us कहीं ना कहीं तो अपन ignorant है ना. So if your why is clear, come back to this how. We'll take care of this. What is that I have to do? वो मैं बताऊंगा.